daycare centers. Food is being provided, shelter is being provided, standard, adequate bathing and toilet facilities, first aid kit, all that is being provided. In fact, the capacity of the shelters is 1.25 lakhs and the occupancy is only 50%. So it is very well for members to express concern, but they should be aware that the Honorable Supreme Court has set up for the state governments, this is a state responsibility, to form a committee under a retired secretary level officer who is monitoring each of these. So as I said, I have all the statistics for each state and union territory. I'd be very happy to share that with honourable members if they would like to drop in and have a cup of tea with me. Question number 122, Srimati Chinta Anuradha. Question number 122, sir. माननीय सदस्य बोल दिया सर 122 सर क्वेश्चन नंबर टेबल का दोबारा कर दें उत्तर सभा पटल पे रखा गया ऑनरेबल मेंबर Thank you, sir. Sir, can the Honorable Minister provide the details of the outcomes achieved through the implementation of RCS Udan in Andhra Pradesh? Does the government propose to review said implementation to identify scope for further expansion and iron out the persistent difficulties? Sir, the Udan Yojana, as we are very well aware, was conceptualized in 2016. And under various rounds of Udan, many operationalized routes have been put in place in Andhra Pradesh. As of today, 28 routes have been operationalized in Andhra Pradesh. Two airports and one waterdrome have been identified for development in Andhra Pradesh. Kudappa as well as Paraskaram water barrage is being worked at a cost of roughly about 20 crores. And we will continue to pursue our development of Udan in every state across the country. Honorable supplementary. Sir, is the government aware that poor financial health of many smaller regional carriers, which has been hampering the effectiveness of the scheme, especially since the pandemic hit? What specific steps have been taken to aid these smaller carriers and allow them to sustain themselves and compete with big airlines? So, as I mentioned in our answer earlier this week on RCS Udan, this is a very important scheme from the point of view. The member has raised a very pertinent question. We have tremendous international to domestic connectivity in our country. We have tremendous connectivity from Tier 1 cities to Tier 1 or Tier 2 cities. But what really needs to be strengthened is last mile connectivity in our country. That last mile connectivity in our country from Tier 3 to Tier 3 cities is being focused at within Udan. Within Udan, we are generally looking under a new part of the scheme that we have introduced in the last year, a sub-scheme called the Small Aircraft Scheme, where we look at only sub-20-seater aircraft to provide last-mile connectivity, both in terms of turboprop, jet, as well as helicopters. And I'm pleased to report to the House through you, sir, that in the last round of Udan 4.2, 132 routes have been awarded, of which the major sector, 16 are helicopter routes and almost 50 are seaplane routes. So our government is concentrating on last mile connectivity to make sure that the democratization of civil aviation does truly take place in the country. संतोष बी श्री बी चंद्रशेखर संतोष जी है सर पहले लिस्टेड नाम जो क्वेश्चन में बी चंद्रशेखर जी का बी चंद्रशेखर नो संतोष सिंह चौधरी धन्यवाद सर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र आदमपुर एयरपोर्ट से कोविड के दौरान जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई थी स्पाइस जेट की फ्लाइटें चलती थी दिल्ली आदमपुर जयपुर बॉम्बे तो डेढ़ साल हो गया वो बंद हो गई हैं और ये दुआबे का बहुत इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है और इसका नया टर्मिनल भी बन गया ऑलमोस्ट तैयार हो गया है
तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये कब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को बहुत भारी इनकन्वीनियंस हो रही है। दुआबा जो जलंधर है ये इंडस्ट्री सेंटर है, ये बहुत लोग वहाँ से NRI हैं, तो डेली यहाँ दिल्ली बॉम्बे आते हैं। तो काइंडली ये बताइए कि कब ये आप शुरू करेंगे। सर, नागर विमानन क्षेत्र एक डीरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है। इस डीरेगुलेटेड वातावरण में भी हमारी कोशिश है कि देश के कोने कोने तक नागर विमानन क्षेत्र से हम लोग कनेक्टिविटी दे पाएं। इसलिए उड़ान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसकी पूर्ति करने के लिए। पिछले 6 वर्षों में 453 रूट्स हम लोग ने संचालित किए हैं। 70 एयरपोर्ट जो नागर विमानन के नक्शे से मिटाए गए थे देश में, उन्हें हम लोग ने दोबारा स्थापित किया है। और जहां तक सांसद महोदय ने आदमपुर की बात की, हमारी प्राथमिकता भी है, पर वहां 3 रूट्स चलती थी, आदमपुर दिल्ली और आदमपुर जयपुर। ये दोनों को भी हम लोग ने उड़ान योजना के अंतर्गत चलाया था, लेकिन 3 साल की अवधि होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग देने की, वो अवधि समाप्त हो गई है। अगले राउंड ऑफ बिडिंग में हम लोग एयरलाइन से भी हम लोग बात करेंगे और उनकी रुचि होगी तो इसको हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल मेंबर कीर्ति वर्धन सिंह। So, under the able leadership of our Honorable Prime Minister, all sectors of the country are taking remarkable strides on the path of progress, and the aviation sector is no exception. So, it has been long bogged down by archaic rules and was neglected. But in acknowledgement of the rapidly rising middle class, a slew of reforms are taking the sector to new heights in terms of connectivity, infrastructure modernization, and fleet enhancement. So also the new policy on the annual regarding aerosports activities, this will further infuse the sector with new energy and the spirit of adventure. So in keeping with this growing demand for air travel and the increasing aerosports activities in our country, I would like to know through you from the Honourable Minister, sir, that is the government considering further streamlining the process of granting permits for the operation of small commercial aircraft and other ultralight machines such as ultralight aircraft from privately owned airfields, as is in the case of helicopter operations today. Thank you, sir. Sir, this question is on RCS and on Andhra Pradesh in particular, but let me respond to the honourable member. He has raised a very valid new area of demand and growth for the country. Aerosports has a tremendous future and a tremendous potential in our country. In the West, where aerosports is extremely prevalent, in the winter season we can bring all of those aerosports to India because of the weather pattern as well in India. We have set up a aerosports organization which will be then decentralized into different state units, and we have mandated in terms of permissions and in terms of approvals. Each of those state units, along with the central unit, will certainly look at an easing of process so we can proliferate this across the length and breadth of our country. श्री हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, इस साल जो सरकारी एदाद शुमार है उनके मुताबिक कोई 80 लाख के करीब टूरिस्ट विजिट किए श्रीनगर, और ये सारा जो ट्रैफिक है ये श्रीनगर एयरपोर्ट ये हैंडल करता है। और बस की बात नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, 110 फ्लाइट्स आती हैं दिन में। तो मैं गुजारिश करूंगा क्या ये कंसिडर किया जाए कि अवंतीपुरा की जो एयर स्ट्रिप है जो ऑपरेशनल है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए टर्मिनल 3, ताकि साउथ कश्मीर का अमरनाथ यात्रा और पहलगाम के एरियाज जो हैं वो कवर हो जाए और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाए। मंत्री जी, कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया, इतनी फ्लाइट जाती है। सर, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो वातावरण हमने जम्मू और कश्मीर में निर्मित किया है, उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास नहीं, राष्ट्र स्तर पर पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड़ पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है। तो सालों और दशकों बाद
एक अमन चैन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है। और इसका स्वयं वर्णन हमारे सांसद महोदय ने अपने एक प्रश्न में किया। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर्यटकों का श्रीनगर में आयोजित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि श्रीनगर की एयरपोर्ट की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं ताकि आधुनिकता के साथ एक पूर्ण रूप से हमारे सारे पर्यटक और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी सुविधा और सुगम सुविधा हम लोग पूर्ण रूप से दे पाएं। जहां तक प्रश्न अवंतीपुरा का है, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है और हम लोग JNK के यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएं। पर श्रीनगर के लिए केवल नहीं लेकिन जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कीर्ति चिदम्बरम जी। Sir, has the ministry considered giving an approval for an airport in Chettinad, Shivaganga, Tamil Nadu, which has an unused airstrip? So, as far as Kartiji's question is concerned, we are very clear. We have identified a number of airstrips, unused airstrips across the country. All of these airstrips are a part of the Udan Yojana. If he will come and meet with me, I will certainly discuss that with him. But indeed, if that particular airstrip is not a part of this current list, the state government has to put in a request to us, and we will certainly include it. And then we will take it forward, depending on the state government's Question number 1, 2, 3, Shri Kishan Kapoor. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1, 2, 3। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटेल पर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 365 का प्रावधान का विवरण भी दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 अनुच्छेद 226 का भी यहाँ हवाला दिया गया है जी। इसके बावजूद भी मामले बहुत अधिक है जी सभी राज्यों में, उसका मैं दूसरे सप्लीमेंट्री में कहूँगा। पर जहाँ भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भू राजस्व आदि मामलों के कारण संभव नहीं हो पाता, क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस विशेष हिस्से का पुनः सर्वेक्षण करने पर विचार करता है ताकि राजमार्ग कार्य अविलंब प्रारंभ हो सके और DPR में संशोधन के बाद जो भूमि पूर्व में अधिग्रहित की जाती है क्या उसे वापस मालिकों को लौटा दिया जाता है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मान्य सदस्य कह रहे ये समस्या है। अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद 1,74,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के बाद हाई कोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर हम हाई कोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले पूछते अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं। उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफर होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट है। कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है और हमारा भी 1956 का NH का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था, उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले
और कुछ राहत मिली है, फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनके जमीन जाती है उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहां जमीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते। तो ऐसी कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के एक एमपी है, उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे। तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे, राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे, पर इसमें सुधारने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मान्य करता हूं और 1 महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि ये केसेज जो है 1,74,327 और सम्मान्य सदस्य जिस राज्य से है हिमाचल प्रदेश, वहाँ 6,518 केसेस पेंडिंग है। अब मुझे बताइए 4 लोकसभा का ये छोटा से राज्य में 6,518 और हमारे कभी कभी 1,000 2,000 करोड़ राज्य सरकार में एक साल डिपॉजिट पड़े रहते पैसे, वो काला बैच लेता है और बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोलो। तो ये पैसे हमारे पास है, पैसे देने के लिए हम तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, तो सिस्टम ऐसी बनी है कि इसमें हम कर नहीं पाते। तो कानूनी थोड़ा उसमें और सुधार करके निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो मामले हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मामले तो आपके गृह राज्य से हैं 37,327 जी, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। वो तो लिस्ट पढ़ ली सबने, आप तो प्रश्न पूछो। और पंजाब और हरियाणा भी है तीसरे नंबर पर। ये जो मामले हैं ये कब से लंबित हैं जी? और अभी मंत्री महोदय जी ने कहा कि इनका निपटारा हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि हमारे वहाँ कहावत है, भू राजस्व के जो मामले होते हैं अगर दादा केस कर दे तो पोता भी लड़ता रहता है जी। एक कब तक इनका निपटारण होगा जी? मैं सम्माननीय स्पीकर महोदय एक बात स्पष्ट कर दूंगा, इससे वैसे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है। मामले जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो काला है, वो निर्णय करता है, फिर उसके निर्णय के ऊपर अपील होता है कमिश्नर लेवल पर। कमिश्नर जो होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का सभी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर अपनी पावर डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को देता है। फिर मेरे पास इतनी तकरारें आई है कि वकील जो काम करने वाले क्वेश्चन में वो और ये वहाँ मिलकर ऐसा निर्णय देते हैं कि अब मेरे पास ऐसी केसेस है, आखिर ये जनता का पैसा है। ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं कि जहाँ 1 करोड़ देना है वहाँ 10 करोड़ अवार्ड हो जाता है। फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो। तो ये पूरा मामला जो होता है ये सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है। मैं आप पूछ रहे इसलिए मैंने डिटेल में बताया, मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता या उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये उनका अधिकार है। मैं इतना ही कहता हूं कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू चेंज द प्रोसीजर ट्रांसपेरेंटली, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव एंड करप्शन फ्री। और ये सर प्रॉब्लम ऐसा है कि आई हैव टू कम टू यू, आई हैव टू चेंज द लॉ after passing the bill, and before that the stakeholders are state government. State government act is there. I cannot take decision as I like it. I need to take the advice from the judiciary, from the high court, from the district collector, from the state administration, and after that I need to make that law, and that is to be a complicated procedure. It is already in the concurrent list. The state list where state is supposed to make the law,
The central list, the central government is supposed to make the law, and the concurrent list, both are the stakeholders, and this is in concurrent list. And that is the problem that we need to concern with all the stakeholders and find out the option on it. We are in the process. I will try my level best that to make it as early as possible to make it this law for the country. माननीय सदस्य श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथन. Thank you so much, sir. To Chairman, sir. Sir, I convey my thanks on behalf of Kakinada parliamentary people to Honorable Minister for sanction of 516F new NH to Kakinada, sir. Thank you so much, sir. And I would like to know from the Honorable Minister, according to answer, thousands of cases are pending with regarding NH, sir. Sir, in my constituency, Komargiri village is there, sir, in Pittapuram constituency. Sir, surrounding areas are getting, farmers are getting 51 lakhs. But this area is in only 27 lakhs. In these days, day by day, land acquisition cost is rising, sir, land cost. Please do with humanitarian grounds according to your level. And I would like to suggest one issue, sir. Regarding arbitration, the collector is saying with arbitration only 30% is there, sir. I know you already said in the answer, sir, collector is there any, sir, is there any team for raising the arbitration amount from 30% to 60%? Honorable member, please. Thank you, sir. सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको भी शायद ये पता होगा, आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत, अलाइनमेंट बदलो, इसके लिए कोई नहीं आता. मैं हमारी लैंड लो और एमपी साहब आते इधर नहीं, इधर से लाओ, इधर से लेके जाओ. इसका मतलब यह है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है, 4 गुना. लोग खुश है. प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है ये इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है. तो इंडस्ट्री एखादी खड़ी होती है, वो पावर मीटर लेता है, वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है. तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, अर्बन का अलग है, फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं. ये इसी प्रकार के इशू है. तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है, रेट ज़्यादा है. और मैडम आपको बताओ, उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज़्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई. तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में, तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया, आप चुप क्यों रहे. तो अधिकारी को अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वो बोलते निर्णय कैसे करें. तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावना को लेकर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे. Answer of the Honorable Minister regarding the payment of compensation. I have a very few. You see, in 2013 Act, Land Rehabilitation and Compensation Benefit, etc., that replacing the Land Acquisition Act, the Act came into force. Then the Act was amended when you have come into the power. Now there the compensation principles have been laid down. That's the compensation benefit has been given in the land acquisition cases. Why you are not extending that benefits which have been given in the land acquisition, in 2013 Act, in the National Highways Act? If that principles have been laid down, then the problem will be resolved. Regarding the determination of the compensation amount is concerned, that's the point. Now, whether anybody is aggrieved or not, that's the later part. They will go on later on arbitration, 220, 30, leave aside all that things. And sir, I tell you one thing. The most important questions in India is now in every compensation matter, any benefit is given, either state government or central government, they are without giving this compensation benefit to the land losers. Okay. They are more willing to go to the High Court and Supreme Court, reduce the litigations, give the benefits to them. Sir, that's my suggestions. Although it's in the form of questions I have raised it, but this is a suggestion to you. सर, ये अध्यक्ष महोदय 2013 में ये लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने ही पेश किया था पार्लियामेंट में.
नहीं 2015 में, 2015 में गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाद में टेम्पररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था। पर आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो वो भावना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज़्यादा पैसा क्यों किया, इंटेंशन चैलेंज होता है। अभी ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती है, राज्य सरकार हम केवल पैसे यहाँ से लेके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफ़ी रिजनेबली बढ़ गए हैं। अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ, अभी हम एक हाईवे बना रहे केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है, 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आएगा, तो कहां से बना पाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा, जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस, आई एम ओपन फॉर दैट, and after that by taking suggestions from all the stakeholders we will finalize the thing and we will come to the parliament and we will tell you. Question number 124, Shri N. Redam. Yes. Thank you very much, sir. Question number 124, sir. Sir, a statement is laid on the table of the House. Thank you very much, sir, for your elaborate answer. Apart from this, regarding my supplementary question, has the government has taken any special measures to study the climatic and geographic peculiarities of Andhra Pradesh before developing these plans, and do the master plans account for the fact that the Andhra Pradesh is very sensitive flooding? Please elaborate. Sir, I would like to reiterate what is already in the body of the answer to the question, that urban planning is a state subject and the functioning of urban local bodies, urban development authorities, is the exclusive prerogative of the state governments. Having said that, I have also said in the answer, and I would like to elaborate, that what we do is that under the Amrut scheme, which is a scheme applicable to those cities which have a population of over 100,000, and there are 500 such cities, we provide some financial assistance for the state governments and union territories to formulate what are called GIS-based master plans. Sir, the incentivization and encouragement from the central government is intended to ensure that the use of technology and geographical information systems circumscribes and then finally weeds out any diversion, leakage or corruption. And under this, for the state of Andhra Pradesh, we have given 26 cities, including the city of Visakhapatnam, are covered. 461 cities which are under Amrut from 34 states and urban union territories have opted for this scheme. Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep have not opted, some of them because they don't have urban populations. Sir, 2 states, Kerala and Madhya Pradesh, are formulating master plans in-house and 32 through outsourcing.
whenever a state government or a union territory formulates its master plan, it must necessarily take into account not only the factors which the Honourable Member has mentioned, factors such as climatic vulnerability, and the Honourable Member mentioned those that result from the elements of nature, flooding, etc. Some states, coastal areas in particular, are more vulnerable. They will have to take it into account. We, on our part, only provide incentives through financial support. Out of this, we have already provided a total of 515 crores for these 500 Amrut cities. And now, under Amrut 2, sir, we are carrying the scheme forward to those cities which did not qualify under Amrut, but which have a population from 55 to 99 lakh. Under the reforms of Amrut, all cities have to map their water bodies, rejuvenate water bodies, carry out green areas, and these steps the master plan should take into account, because these provide sensitivity, both in terms of vulnerability. Sometimes there's excess water, sometimes there's drought, but then I don't think the states and union territories would want the central government to do this, because this is very much a part of the constitutional division, and I think most states would be wanting to preserve their jurisdiction when it comes to the preparation of such master plans. Honourable Member Supplementary? No? Sir, what steps has taken the government has create local capacities in the area of town planning and management in Andhra Pradesh, sir? The specific question that the Honourable Member is asking is about capacity building, and I'm very happy to inform him that under the same scheme, we provide capacity building and training, and so far we have trained 2,606 officials through 73 training programs, and this includes 61 from Andhra Pradesh, out of which 25 in particular are from Visakhapatnam. Jaydev Gallaji. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, there are two aspects to this question. One is preparing the master plan for cities, and the other is the development of cities for which master plans have already been prepared, sir. Sir, Amaravati, the capital of Andhra Pradesh, which I represent in this House, is one such city for which a master plan has been prepared, and development projects of the city have also been taken up. The work of various projects went on well till 2019, but after that the ministry has stopped executing the works. Since it is question hour, sir, I'll be very specific and pointed, and request the minister to be specific and pointed as well, sir. Sir, as far as I can remember, 25 work orders under 20 projects with an estimated cost of 2,000 crores under the Smart City mission have been issued for Amaravati in Andhra Pradesh. But not even a single work has been completed till date, sir. So I would like to know from the Honourable Minister, what are the reasons behind this, and by when the government is going to complete these projects? Thank you, sir. Since the Honourable Member wants me to be precise and specific, I am delighted to do so. The question 1 to 4 is on the preparation of master plans and what assistance the central government provides by way of incentivization for preparing GIS-based master plan. The Honourable Member has moved from there to a project under the Smart Cities mission, which is executed by a body which executes, and there are 100 such smart cities, sir, including the one that he is referring to, and this body oversees the design. First of all, each smart city is to come up with a set of projects. That is the basis on which it got elected or selected. Then, once that is done, they have to execute those projects. As far as I can see, the Amaravati, and I have some statistics with me, the total number of projects which have been identified are 21. The cost is 2,046 crores. The projects are ongoing, and the completion is, as he rightly says, leaves much to be desired. The financial progress, we have released 488
crores. The Government of India share transferred to the special purpose vehicle is 488 crores. State share transferred is 488 crores. Expenditure of the Government of India is 488. Expenditure of the state is 290. The expenditure release is 80%. Insofar as the projects, their exact state physical, since this is not part of either the question or the, if I may respectfully submit to my friend, the honourable member, this was, when we come prepared for answering questions, we anticipate supplementaries. But this question is so far removed from what I had come prepared. I'd be very happy to invite him for a cup of tea or coffee, sit down with him. I will also call the whoever is the headmaster of this special purpose vehicle, and we will get the details and find out what the precise stage of each project is. Because Badruddin, whatever you prefer, and depending on the time of the day, if you'd like to come a little in the evening, we can organize that too. सर मैं मंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से गुवाहाटी से आता हूँ और गुवाहाटी जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का आप जा चुके हैं, वो गेटवे है, लेकिन उस शहर की जो हालत खराब है हजरत सर, वो बहुत बुरी हालत खराब में है। जरा सा बारिश हो जाती है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक पानी चला जाता है। लास्ट ईयर तो रिकॉर्डेड बारिश हुई, किसी गली में जा नहीं सकते थे। आसाम के लोग इसके प्रमोट करेंगे कि उसको एक टूरिस्ट एरिया भी है, तो क्या मास्टर सर इसको मास्टर प्लान में लेंगे, या लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं लिया है तो जरूर लेंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। Sir, as I mentioned earlier, and I'm happy to reiterate, the preparation of the master plan is a function which is carried out by the state government. And I have no doubt that the state government, in the preparation of the master plan, will certainly factor in the points made about excessive rainfall or the climatic vulnerability, which we are all very familiar with. And I'm sure I would be happy to sit down with the honourable member and talk to the state government and find out what exactly is the state of preparation. I am told that the state government is still to prepare a management plan, aquifer water management plan under Amrut. So we are in touch with the state government precisely to do that. But my offer stands. I'll sit with the honourable member and with the state government representatives to find out what the stage of the preparation of that plan is. Sri Manikam Tagore ji. Sir, thank you so much, sir. Sir, in the reply, Honourable Minister has replied that master plans have been approved for 152 cities, and a draft GSI-based master plan has been formulated for 132 cities. Among these cities, how many are from Tamil Nadu, and whether for Madurai Corporation and Sivagasi Corporation, any master plan has been approved? How much Government of India has allotted for the two cities of Madurai and Sivagasi? And Sivagasi Corporation is the youngest corporation in Tamil Nadu. Therefore, I request the Honourable Minister to be a little generous on Sivagasi. Thank you. I would like to share with the honourable member that generosity by the central government should be taken as a given. We provide money for the country as a whole. So, as I said, for the preparation of master plans in 500 cities, which are covered under the Amrut Yojana, we have provided, I think, if I remember offhand, a total of 631 crores or thereabouts. I stand to be corrected on the precise figure. Now, all the cities in Tamil Nadu, which are Amrut cities, have the option of availing of that facility. Insofar as whether Madurai or any other particular city has availed of this is something that I am in the process of ascertaining. And even whilst we speak, if I have the answer, I'd be happy to place it. Otherwise, I'd be happy to meet my friend and share that information, because I carry the broad framework, but this is a state government issue, whether they have, I know 461 have availed of it and they are under preparation. But whether a particular city has prepared it already or is in the pipeline, I'd be happy to share that. Question number 125, Sri K. Muralidharan. Question number 125, sir. Sir, a statement is laid on the table of the House. Sir, the petrol price in India was 7.9
0.41 per liter in May 2014. 71. When the international 71. When the international crude oil price was US dollar 106.86 per barrel, but today the petrol price is more than 100 per liter. When the international crude oil price is US dollar 7.799 per barrel. 77. So 77.99 per barrel. I would like to know why the petroleum products price in India is not maintained or reduced in corresponding with the international crude oil price. I want to thank the honourable member for making it rather easy for me. I want to remind the honourable member that prices of petrol and diesel were deregulated in 2010 and 2014 respectively. We have on our own done a study of what happened in 2014, and we've done a study for 7 to 8 years, starting 2014. And I'd be happy to share those details with my friend. I don't know whether I have the study with me just now, but I can remember offhand. In the last 8 years, the increase has been the lowest since 1974. Because I know 1974 and 1973 because that's a time when I was a student in the university and I had the privilege of filling up on the bunk on a two-wheeler periodically. So today, typically what has happened is that international, because we are deregulated, the price of petrol at the bunk is determined by the cost of production as per the indices which are available, the cost of transportation, that is the freight, insurance charges, and the exchange rate, because you're paying in a dollar. Now, I don't know what today the dollar rate is X. In 1974, it was very different. Then you add to that the refiner's margin, dealer's margin, and then the central government excise and the state government's VAT. The central government, in order to maintain the price at the bunk at a reasonable level, reduced the excise duty on 2 occasions, in November 2021 and May of 2022. And I'm happy to inform you that some other states also reduced the VAT. Now we have a situation where some of the states, I'm not calling them BJP states because there are 1 or 2 others which have also reduced their VAT. Some of them are charging VAT at the rate of 17 rupees. Other non-BJP states are charging at 32 rupees. So there is a differential. When the honourable member was saying today the cost of petrol is 100 in some places. In some places, non-BJP states, in others it is 8-10 rupees cheaper. Today, the important issue is, at a time when the global situation, I'm talking about the geopolitics, is facing many uncertainties. Let me give you the example of petrol prices. Petrol prices internationally went up by a large margin. They went up by percentages which are, sometimes 40% higher, 50%. In India, petrol price increased only 2% during that representative period between 21 and 22. Why? Because we reduced our excise. And we urged states also to reduce their VAT. Some did, some didn't. Now what has happened is that the ability to keep the price steady and allow the increase of petrol only at 2%, while internationally it went up by a very large percent, was because the OMCs, as good corporate citizens, took a loss. The OMCs, for instance, I have some figures here which are very telling. At a time when they made the profit before tax of rupees 28,360 crores in H1 of financial year 2021-22, this is a profit before tax of 28,360 crores. These 3 companies, IOCL, BPCL and HPCL, now in the H1 of the further year, they have booked a combined loss of 27,000
276 crore in H1. So it is a combination of the central government's reduction of excise at a time when we were going through a very difficult period and there were other expenditure liabilities, state governments reducing their VAT. So today petrol prices in India are perhaps the lowest. I normally like to choose my words carefully because when I look at honorable members, they will then come up, no, here is so. I used to say the average price of crude of the Indian basket increased by 102%. It went up from $43.34 to $87.55 between November 2020 and November 22. The retail price at that time, when it was up by 102%, of petrol went up only by 18.95%. Now, how much of this is the exchange rate variation? That is one question. But I think a government which is committed to energy security and affordability. By affordability, I mean it's not a question of just making energy available at the bunk at reasonable prices, but also ensuring that in the process of doing that, you don't disrupt the system. You've seen, the honorable member would have seen, sir, what has happened in neighboring countries, where for the love of money, you could not get energy. In fact, we ourselves provided some assistance to them of, I think, up to $4 billion or no. We, therefore, have ensured that throughout this crisis period, there was never any shortage of petrol or diesel, and the prices did not go beyond what? Ideally, we would like to have the prices come even lower. But as I said, you have to navigate and through what is doable rather than... I have also here figures of how much the percentage increases were in other countries. In the US, 144%. Honorable Mr. Speaker, sir, I am very happy to share details, and I'm also your disciple. I follow your instructions. I don't respond to things which are said when people are sitting. But let me say, I think this is an occasion where the honorable members सब दिया हुआ है. तो अगर मुझे आपको लगता है मुझे Sir, I also want to share with you that today, if you look at the international prices and our prices, I was hoping the honorable members will contribute that in their states also, the few that are left, that they will bring the prices down there also through a reduction in VAT. But I don't see that happening. Mr. Speaker, sir, sir, the issue here is today when we are negotiating, we have reached to the point of the 5th largest economy. We will soon be the third largest. Energy is the driver of economic strength. And I would like to point out that the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. So the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. Sir, ये 5 states हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया है. अरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे you can then join the mainstream celebration. प्रश्नकाल समाप्त. इन स्टेट्स में प्रश्नकाल समाप्त. मंत्री जी प्रश्नकाल समाप्त. माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है.
आइटम नंबर 2 श्री वीके सिंह जी। वीके सिंह जी। Yes, Speaker, sir. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business. सभापति जी 30 से ज्यादा आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री रामेश्वर तेली जी। श्री संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री हरदीप सिंह पुरी जी। श्री जी आइटम नंबर 6। Sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Kaushal Kishore, I rise to lay the papers listed against his name as serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 श्री जॉन वर्ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 में उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7A महासचिव महोदय। Sir, I have to report that Rajya Sabha has returned the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Second Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha with amendments. Sir, I lay on the table the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Second Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments. आइटम नंबर 8 श्री जुएल ओराम जी। श्री रतनलाल कटारिया जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथाविध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 9 श्री जगदम्बिका पाल जी। Sir, with your kind permission, I wish to lay the following statements, Hindi and English version, of the Standing Committee on Energy. Action taken by the government on recommendations and observations contained in Chapter 1 of the 28 Report 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Energy on action taken by the government on recommendations and observations contained in the 17th Report 17th Lok Sabha of the Committee on the subject action plan for achievement of 175 gigawatt renewable energy target. Number 2, action taken by the government on recommendations and observations contained in Chapter 1 of the 20th 9th Report, 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Energy, on action taken by the government on recommendations and observations contained in the 18th Report, 17th Lok Sabha of the Committee on the subject development of coal blocks allocated to power sector company. Action taken by the government on recommendations and observations contained in Chapter 1 of the 30th Report, 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Energy, on action taken by the government on recommendations and observations contained in the 19th Report, 17th Lok Sabha of the Committee on the subject delay in execution and completion of power projects by power sector company. Thank you. Item number 10, Shri P.P. Chaudhary ji. Sir, with your permission, I wish to present the 17th report, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 13th report on the subject COVID-19 pandemic, global response, India's contribution and the way forward as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Item number 11, Shri Ramesh Bidodi ji. Shri Unmesh Patil ji. With your kind permission, I rise to present the 16th report, that is in English and Hindi version of the Standing Committee of Petroleum and Natural Gas,
as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 12, Shri Rajesh Sharma ji. Sir, I seek leave the House to move the motion that this House to recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect one member from amongst the members of Rajya Sabha to associate with Committee on Welfare of Other Backward Classes for the unexpired portion of the term of the committee vice Shri Bishambar Prasad Nishad, retired from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so elected to the committee. Thank you. प्रश्न है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्य प्रहर देंगे, अवसर देंगे, देंगे। श्री डॉक्टर वी कलानिधि जी, ओके, अभी ओके, अब यू विल गेट द चांस। पर कलानिधि साहब, मिस्टर कलानिधि, श्री 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 उदय प्रताप सिंह जी, ओके ओके, जी जी जी, अब बैठिए बैठिए, अभी अवसर देते हैं, बैठिए। उदय प्रताप जी, जी जी, सिग्रीवाल जी, सिग्रीवाल जी, अब बैठिए बैठिए प्लीज। माननीय सभापति महोदय, अभी बैठिए, उनको बोलने दीजिए। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरे देश में हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई और वो ग्राम रोजगार सहायक जो डिजिटल मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे काम ग्राम पंचायत के संधारित करता है और इनका वेतन आदि अभी मनरेगा से कुछ व्यवस्था की गई है। जो मेरी जानकारी है वो मनरेगा के राशि में से कुछ राशि आहरण करके इनको वेतन दिया जाता है और इनके ग्राम सभा के प्रस्ताव पर इनकी नियुक्ति होती है और ग्राम सभा के प्रस्ताव पर अलग कर दिया जाता है। बड़ा तात्कालिक जैसा पद है। मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है सरकार से कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षक के वेतन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है और उनका जो जॉब है वो बाकायदा नौकरी लगती है और पूरे उम्र भर वो नौकरी करेगा, फिर रिटायरमेंट होगा और उसको जो बीच की सुविधाएं आदि मिलती हैं, वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता वगैरह उसे मिलता है। इसी तरह रोजगार सहायक हमारा जो है इसकी कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है, वेतन की कोई गारंटी नहीं है, कब इसको ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ इनकी एक तो इनका जो जॉब है उसको तय करे कि ये इनका जॉब जो है ट्रांसफरेबल होगा, भले ही जनपद के अंदर हो, इनकी नौकरी रिटायरमेंट एज तक चलेगी, बगैर कोई गंभीर कारण के इनको पदमुक्त नहीं किया जाएगा और इनको वेतन जो आज के समय के हिसाब से जो मापदंड है शिक्षक को दिया जाता है, जो रेगुलर सचिव को दिया जाता है, उस तरह से वेतन आदि की व्यवस्था भी ग्राम रोजगार सहायकों की हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अगर आवश्यक हो तो सरकार राज्यों को एडवाइजरी अगर जारी कर सकती है, मुझे लगता है और सुविधा होगी। आपने श्री खलीलुर रहमान जी, Respected Chairman sir, this is to bring to your notice that Murshidabad district has a population of more than 71 lakhs, a density of 1,334 person per square kilometer according to the 2011 census, in which Samsirganj and Raghunathganj block is densely populated with population of more than 3 lakhs respectively. National Highway 34 plays the backbone for transportation in Murshidabad district, which intersect both Samsirganj and Raghunathganj block equally. Dagmangla Mode Junction and Umarpur Junction under Samsirganj and Raghunathganj block respectively, the gateway to Jharkhand state, North Bengal and Birbhum district. The presence of government colleges, hospitals and railway crossings and Dhulian Ganga and Jongipur railway station within a range of 1 kilometer contribute to the high density of traffic flow in both of the junction. This leads to jams for thousands of student, passenger vehicle, transport vehicles, patient and ambulance on a regular basis.
Incidents like death in ambulance on way to hospital are so frequent in both of the junctions. In view of the above, construction of a flyover in both of the junctions over NH 34 is the need of the hour. People will be highly benefited not only from Samsarganj and Raghunathganj block, but also Murshidabad, Malda, Birbhum district, North Bengal and Jharkhand state too. Along with that, it will be very helpful for small-scale businesses growing every day throughout the district, in which directly impact the financial sector. Construction of these two flyovers will reduce the travel time between Kolkata and Siliguri by more than 2 hours. Sir, through this House, I strongly demand to consider my proposal and notify the concerned authority to take the necessary steps for the construction of these two flyovers. Thank you, sir. श्री बसंत कुमार पंडा जी, अभी नंबर देता हूँ, बैठिए 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 बैठिए, लिस्ट जरा चलने दीजिए, बैठिए टूरा जी, बैठिए बैठिए प्लीज। श्री बसंत कुमार पंडा जी, बसंत कुमार पंडा जी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आपको अवसर देंगे प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि शून्यकाल के दौरान अभी मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी और नयापारा जिला दोनों को मिलाकर के है और दोनों आकांक्षी जिले हैं। यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग चिकित्सा, उपचार, छुट्टियां मनाने के और शादी विवाह तो खरीदारी करने के लिए विशाखापट्टनम आना जाना करते हैं। कालाहांडी जिला विशाखापट्टनम शहर के ऊपर बहुत निर्भर है, लेकिन यहाँ से विशाखापट्टनम तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जिसके लिए क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए कालाहांडी जिला के जूनागढ़ से विशाखापट्टनम के लिए प्रतिदिन एक डीएमयू ट्रेन आरंभ की जाए, जो सुबह जाए और शाम को वापिस आ जाए। एवं और निवेदन है कि नोआपाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि एक जिला मुख्यालय है, आकांक्षी जिला है, यहाँ पर दिल्ली आने के लिए समता एक्सप्रेस आती है लेकिन रुकती नहीं है। उसका स्टॉपेज किया जाए। लांजीगढ़ वेदांत एल्यूमिना फैक्ट्री का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जहां पर हीराखंड एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज की व्यवस्था की जाए। और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को निवेदन करता हूं कि ये मांगों पर विचार करें और तुरंत निर्णय लें। धन्यवाद। श्री संजय जायसवाल जी। बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार
महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं। वह सैकड़ों करोड़ के मालिक होंगे। जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है। इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से स्लिप भेज दीजिए जो संबद्ध करना चाहते, प्लीज प्लीज बोल दिया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्लिप भेज दीजिए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा पावर मिनिस्ट्री की 2000 जुलाई 21 के अंदर एक नई स्कीम लॉन्च करी गई। जिस स्कीम का नाम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम RDSS स्कीम है, जिसका बजट का प्रावधान लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। इस स्कीम का मकसद यही था कि जो स्टेट्स के अंदर पावर सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, उसको भी पैसा खर्च किया जाए। सर, मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को भी इस स्कीम के तहत 8,500 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है, पर जुलाई 2021 की लॉन्च हुई स्कीम आज तक राजस्थान में पूर्णतः लागू नहीं हुई। और इसी स्कीम का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी था कि इस स्कीम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बनानी थी, जिसके अध्यक्ष एक सांसद होता है। वो आज तक उस कमेटी गठन नहीं किया गया। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र चूरू के अंदर पूरा एक जो बेल्ट है, सरदार शहर, सुजानगढ़, बिदासर, रतनगढ़ का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुएं बहुत ज्यादा बन गए हैं। हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है सर कि इस स्कीम्स के लिए हमारे पास बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 33 kV के जीएसएस चाहिए, 132 kV के हमको पावर सब स्टेशन चाहिए, पर सरकार के पास में कोई नीति नहीं। हाल ही के अंदर लूनासर गांव सरदार शहर का है सर, 5 दिन तक वो गांव अंधेरे में रहा, क्योंकि सेक्टर पे रिफॉर्म पे काम नहीं हुआ और गवर्नमेंट नए कनेक्शन देती जा रही है। सर, ऐसा ही नहीं, हिंदुस्तान का मात्र एक स्टेट राजस्थान होगा जिस स्टेट के पास में अपनी ढानियों में बैठे हुए एक आखिरी व्यक्ति को देने के लिए कोई योजना नहीं, कोई रोशनी नहीं का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अकेले में 18,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी के नए कनेक्शंस की डिमांड है। स्टेट गवर्नमेंट सोई हुई है। सर, लास्ट में कहना चाहता हूं, इस इतनी महत्वपूर्ण योजना को लागू किया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है, जो डीसी बनानी है, डीसी ही पे एक प्लान बनाएगी कि कहां पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च करना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार को बाध्य किया जाए और ये 8,500 करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने दिए हैं, उसकी उनको आप उनका यूज कर सके, ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं। थैंक यू चेयरमैन सर। Sir, Ministry of Railways had announced to redevelop 12 stations in Odisha to international standards with superior passenger amenities, and a memorandum of understanding was also signed in 2019 between Bhubaneswar Development Authority and East Coast Railway Zone to construct a world-class station building at Bhubaneswar. However, for the remaining 11 stations, which includes my parliamentary constituency station Barampur and also Cuttack, Jharsuguda, Bhadrak, more important stations, sir, there is no development for construction and development activities. Sir, I therefore request the Honourable Minister to prepare an action plan and allocate funds for the proposed development works in the remaining 11 stations, as more than 3 years have been passed and the expectations of people of Odisha have not been fulfilled so far. Thank you, sir. अधीर रंजन चौधरी जी। सर, मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार से ये मांग भी करूंगा, ये सरकार इस विषय पे एक श्वेत पत्र भी सदन में पेश करे। सर, आज की इंडियन एक्सप्रेस अगर देखें तो शुरू में लिखे जाते हैं कि एम्स में जो साइबर अटैक हुई थी, वो अटैक चीन से हुआ था। सर, इस पेपर में ये भी लिखा गया कि जब हमारे सीमा में झड़प होते हैं, चीन जब हमलावर होते हैं हमारे ऊपर, तब आज की हिंदुस्तान की सरकार लाल आंख दिखाने के बदले चीन से सारे आयात बढ़ा दिए हैं, चीन से आयात बढ़ा दिए हैं। सर, तो ये सर ये देखते हुए हमें लगता है कि ये सरकार की मंशा क्या है। सर देखिए सर, अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड होते हैं सर, उसमें हमारे गिरावट आते हैं, लेकिन चीनी के साथ हमारा जो ट्रेड होते हैं वो चीनी फायदेमंद होते हैं सर। तो जब चीनी सरकार हम पे हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तबाह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो चीन की
सर चीन की मदद करने की क्या जरूरत है? सुशील ये कुमार मैं सरकार से पूछना चाहते हैं। नहीं। लालक धन्यवाद कब दिखाएंगे हमारे सुशील कुमार सिंह जी, श्री सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद महोदय। हमारे बिहार में दीजिए ना, आप जानते हैं चर्चा का क्या तरीका है। चर्चा के लिए अनुरोध कीजिए बीएससी में, लेट इट बी डिसाइडेड प्लीज। आप तो जानते हैं, बोलिए। मेरे बिहार में, दक्षिण बिहार में या उत्तर बिहार में भी, पूरे बिहार में इस वर्ष अनावृष्टि के चलते धान की फसल मारी गई, अकाल की स्थिति आ गई। उसके बाद जहां जहां नहर थे, नहर की सुविधा थी सिंचाई की, या पंप के माध्यम से जिन किसानों ने किसी तरह से धान की रोपाई का काम किया भी, उसमें भी एक मधुआ नाम का रोग लगा और उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो वैसे किसानों का तो दोहरा नुकसान हुआ, जिन लोगों ने धान की रोपनी में जुताई, कुड़ाई, फर्टिलाइजर वगैरह में अपना सारा खर्चा कर दिया। महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना लागू नहीं है, जिसके चलते किसानों को बीमा नहीं मिल पाता। और बिहार सरकार की स्थिति यह है, बिहार सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार तो जहरीली शराब पिलाकर सामूहिक हत्याएं करा रही है। इसलिए बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं है वहां के किसानों को कि वो उनको राहत पहुंचाएगी, वो मदद करेगी। वहां तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग होगा कि जिन किसानों का फसल मधुआ रोग से बर्बाद हुआ, उनको मुआवजा, उनका कंपनसेशन भारत सरकार के माध्यम से दिया जाए। ये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ। साहब का संरक्षण चाहिए सर। सर आपका संरक्षण चाहिए सर। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं उस राज्य से आता हूं जिस राज्य में सिर्फ 1% सरफेस वाटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि जल जीवन मिशन के द्वारा उन्होंने हमारी प्रांत की सरकार को, मतलब वर्तमान की कांग्रेस की सरकार को 2022-23 में 13,328 करोड़ रुपए दिए। वर्तमान में खाली 19% की जो इनका जो पैसा लगा है, खाली 19% पैसा लगा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो 12 झालावाड़ है। 12 झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से आता है। मेरे क्षेत्र में एक बड़ा डैम बनने जा रहा है। वर्तमान की सरकार ने उसको 906 गांव में पानी पहुंचने की आवश्यकता है। वहां के वर्तमान के सरकार ने 2 साल की एलोकेशन बढ़ाने की बात बोली है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झालावाड़ जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें वर्तमान सरकार ने अपने नंबर एलोकेशन बढ़ाने के लिए, सरकार के नंबर को अच्छे करने के लिए, इन्होंने सबको एक मधुर वातावरण करने के लिए उन्हें बात रखी है। पर वास्तविक स्थिति यह है कि वर्तमान स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमारी राज्य सरकार ने जो काम करना था वो पूरा अब तक नहीं किया है। मेरे आकांक्षी जो जिले हैं उसमें 21.1% काम हुआ है और मेरे झालावाड़ में भी हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान केंद्र सरकार, माननीय मंत्री जी बैठे हैं हमारे अर्जुन जी मेघवाल जी, मैं आपसे